So this is the third lecture of this series. So first of all, we'll state a lemma. Actually, this we have done already here. So let us state this lemma. The statement is if we have a sequence of sets in a summary S, if this an it's a sequence in summary S, then we can find a disjoint sequence. We can find a disjoint sequence. Then we can find a disjoint sequence Cn such that this union An is equal to union Cn, and for each n greater or equal to 1 there exists k greater or equal to 1 such that this Cn is subset of Ak. इसका स्टेटमेंट आप लिख दीजिए. If we have a given sequence An in summary S, so throughout this lecture series this S will always denote the summary. Okay, तो आपने एक सीक्वेंस ली है an summary S से, so then you can find the sequence Cn. Again, this is again in S. Okay, in S such that the union An is same as union Cn, and for each n greater or equal to 1 there exists k greater or equal to 1 such that Cn is subset of Ak. This you have actually done. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसका तो हमने ऐसे किया था. इसको हमने लिखा था ये जो यूनियन An है ना, union An can be expressed as first of all we will expand it. It's A1 union A2 union A3. Okay, then this A1 को हम ऐसे लिखेंगे A1 as it is, क्योंकि मुझे डिस्जॉइंट यूनियन चाहिए. आई विल राइट दिस A2 को मैं रिप्लेस करूँगा A2 माइनस A1 से. इसी तरह से मैं A3 को रिप्लेस करूँगा A3 माइनस A1 यूनियन A2. यहाँ तक ठीक है, जो हमने सेकेंड लेक्चर में किया था. Now next this A1 as it is union this A2 minus A1, it can be written as finite disjoint union of members of this S. It's actually a sigma set. So this A2 minus A1, okay, A2 minus A1, it can be written as like this A21 union A22 union. Continue. Then we have A3 minus A1 union A2. This can be written as A31 union A32 union. Now they are actually not disjoint sets, and it is the countable union actually, because you know that the countable union of countable sets again like it's countable है ना. तो इसके जो इंडिसेस है ना हर जगह वो देखिए फर्स्ट सेट जो है A1 इसका इंडिसेस 1 इंडेक्स 1 है. ठीक है, जो सेकंड यूनियन आपके पास है उसका जो इंडेक्स सेट है वो है 2 1 2 2 2 3. इट्स अ काउंटेबल सेट. मैं इंडिसेस की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द सेट्स. मैं सेट्स के बारे में कुछ नहीं जानता वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, बट यू कैन सी दीज द इंडेक्स सेट्स एक्चुअली काउंटेबल फॉर ईच यूनियन.
and you know that the countable union of countable sets is actually this whole अगर आप सारा इंडेक्स सेट एक साथ आप लोगे ना, आप जैसे पहले 1 है, दूसरे में A2 2 1 2 2 2 3 है, और थर्ड में आपके पास 3 1 3 2, अब आप इसको कंबाइन करोगे, इट्स अगेन अ काउंटेबल. So this index set is actually a countable set. Okay. So let me first allow these students. वीडियो आप ऑन रखिए, मैंने कहा ना वीडियो लेक्चर के दौरान ऑन रखिए. Okay, yeah. So this index set, the whole index set is actually a countable set. So I can express that index set. It's actually the union of index sets. है ना, पहला जो सेट है वो 1 है, दूसरा जो सेट है 2 1 2 2 2 3 है. इट्स अगेन काउंटेबल. थर्ड सेट जो आपके पास इंडेक्स सेट, दिस इज 3 1 3 2 3 3 एंड सो ऑन. So this is a countable set. So this can be expressed as 1 2 3 so on. So it has a 1 1 correspondence with set of the positive natural numbers. So I can express this as C1 union C2. So I can express this. This is the union n runs from 1 to infinity. So this can be now expressed as a C1 union C2 union, and they are now members of S, and they are also disjoint. And also each Cn is subset of certain A1. तो आपके पास एक्चुअली ये है A1 union A2 union U equal to C1 union C2 union so on. ये जो C1 है ना, C1 C2, हर कोई C1 C2 C किसी न किसी A1 या A2 का सबसेट है ना. So for each n you can easily verify this, because obviously this C1 is same as A1, first set तो सेम ही है, मगर सेकंड जो है ना C2, ये किसी ये A2 के बराबर नहीं, A2 का एक्चुअली सबसेट है ना, ये A2 का सबसेट है. इसी तरह से C3 भी A2 का सबसेट है, यू कैन सी दिस C2 भी. तो हर कोई Cn जो है ना किसी ना किसी A का सबसेट है, मगर ये जरूरी नहीं कि ये K n के बराबर होगा, क्योंकि आपके पास जो है ना, बिकॉज दिस A2 माइनस A1 इट इज सबसेट ऑफ A2, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना. और इस A2 माइनस A1 को आपने लिख दिया डिसजॉइंट यूनियन, तो इसका हर कोई मेंबर जो होगा ना वो इस A2 का सबसेट है, उस यूनियन का. तो उसी यूनियन में है C2 C3 C4, वो सारे A2 के ही सबसेट्स हैं. तो इस वजह से ये जो K है ना, ये n के बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू n. So also for each n greater or equal to 1, there exists K greater or equal to 1 such that this Cn is subset of A K. So this is the proof of the lemma. ये आपको समझ आ गया इसका प्रूफ? तो नेक्स्ट देखिए, आप लोग वीडियो ऑफ मत रखिए. ये जो है ना रोल नंबर क्या है, इसने अपना वीडियो ऑफ किया है. आप पता नहीं क्लास में होते हो कि नहीं, वो हमें पता नहीं है, इस वजह से वीडियो को ऑन रखना है. नेक्स्ट वी डिफाइन अनदर क्लास ऑफ सेट्स. जैसे हमने समीरिंग को डिफाइन किया है, अब हम अलजेब्रा को डिफाइन करेंगे. सो अलजेब्रा इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस समीरिंग. सो लेट्स डिफाइन अलजेब्रा which is nicer than this the class of the semiring. Okay, so what's the definition of algebra? Again we have a non-empty set first. A class A of subsets of, it's equals to a subsets of X is
is said to be an algebra if it satisfies the following आप लोग ने फिर से कैमरा ऑफ किया। आपको प्रॉब्लम क्या है? कैमरा क्यों ऑफ करते हो? हाँ, समझ नहीं आ रहा आपको? इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सर मेरा यस, कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें? क्या डिस्कनेक्ट हो रहा है अगर मैं कैमरा ऑन कर। चलिए तब कनेक्शन मतलब तो स्ट्रांग नहीं है आपका इसका है। Okay. So algebra, it's again a class of subsets of set X having the following properties. It's closed with respect to intersection and complementation. It's okay. If A comma B belongs to A, this implies their intersection is again in A. That's the first property. And the second property is if A belongs to A, this should imply its complement belongs to. So that is, this A is closed under finite intersection and complementation. Complementation. So that it has two properties. First property, it's closed with respect to finite intersection, and the second property, it's closed under complementation. Under complementation, it's closed. ठीक है definition. Next we will see that every algebra is a semi-ring. Every algebra is a semi-ring. Okay. So that's very simple. Semi-ring में क्या होना चाहिए? Semi-ring should be closed with respect to intersection and the empty set should be there. Semi-ring की तीन प्रॉपर्टीज है, अलजेब्रा की दो प्रॉपर्टीज है। तो आपको प्रूव करना है कि अगर आपके पास ये अलजेब्रा है जिसकी दो प्रॉपर्टीज है, इट शुड फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ semi-ring also. So must have those three properties. So let's state the result first. Theorem. The statement of the theorem is for an algebra A, for an algebra A, अगर आपके पास गिवन algebra A है of sets, for an algebra of sets the following statements hold. Following statements hold. The first one is the empty set and the whole space are there, and the second property is it's the algebra is closed under finite union. This A is closed under finite
union. And the third property is the algebra is assembly. But A is assembly. Okay, the algebra is a so these are three properties of algebra. Okay, ये आपको चेक करनी ये तीनों properties. आपके पास अलजेब्रा की दो प्रॉपर्टीज है जो कि डेफिनेशन है उसकी. एक तो ये है कि इट्स क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन एंड इट्स क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंटेशन. तो आप कंक्लूड कर सकते हो वहां से ये जो एम्प्टी सेट है फी सेट है ये ए में है. ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का होगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. एग्जैक्टली. So since this algebra is actually non-empty, it's always non-empty. It contains at least one. So there exists a subset A of X such that A belongs to this cursive. Now about property 2 of A. By property 2 of A complement also belongs to A. Okay. Again by property 1. A intersection A complement belongs to A. Okay. So but then this should belong to A because it is the empty set. Now the empty set is in A, therefore its complement. So therefore phi the complement which is equal to whole space X, it's also in A. तो पहली प्रॉपर्टी आ गई आपके पास फी सेट और X जो है ना ये दोनों A में है. Second property क्या है? It's closed under finite union. It's closed under finite union. So now let's take any two members. Finite के लिए आपको सिर्फ दो के लिए चेक करना है. तो rest follows by induction hypothesis. You can show any finite union. Let's take this thing in, right? So this implies A complement, B complement belongs to this because it's closed under complementation. Now it's closed under intersection. Okay, because it's closed under finite intersection. Again, now this is in A, therefore its complement is also in A. Now you can apply the De Morgan's law. It's equal to A union B. So whenever A and B belongs to A, then their union is also in A. So therefore A is closed under finite union. अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको वो प्रूव करनी है कि ये क्या है, इट्स अ सेमेरी. तो सेमेरी की दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी इसके पास है ना. एम्प्टी सेट वो हमने प्रूव किया वो इसमें है और ये क्लोज्ड है अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन वो तो डेफिनेशन ही इसकी है. अब आपको सिर्फ थर्ड प्रॉपर्टी चेक करें. द डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाइनाइट डिजिट यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ ए. So finally so let's take these two sets. Let A comma B belongs to this. Then A minus B which is equal to A intersection B complement. But this thing is in A.
a minus b is equal to a intersection b complement, मगर ये a में है because a is in a, b is in a, so b complement is in a, so which means that a intersection b complement is in a, it's in a. So which means that this a minus b can be expressed as finite digit union of members of a because it's itself in a. So rest of sets we take the empty sets. So this means this a minus b can be written as C1 union C2 union Cm, where C1 is equal to a minus b belongs to a, and C2 equal to C3 equal to Cm equal to the empty set. This is also a. So thus we have expressed this a minus b as a finite disjoint union of members of a. So let's this a is a summary. A is a summary. A is summary. So therefore every algebra is a summary ring. Every algebra is a summary. The next topic is so next is the examples of summary. Examples of summary. ये आपने किया नोट? जी सर. Examples of यार आप अटेंडेंस का ख्याल रखना फाइनली इसका स्क्रीनशॉट लेना. एग्जाम्पल्स ऑफ सैमरी. Let x be not equal to empty, and let's take this s is equal to these consisting of only two members. X. Then this s is a summary. Is it? And it is the smallest summary. It is the smallest summary. Is it smallest one? So, x इसने लिख दिया है smallest under inclusion. नहीं, it's the smallest algebra, not the smallest. ये मुझे confusion था. And it is the smallest algebra. ये smallest summary नहीं, smallest algebra है ये. क्योंकि summary में जरूरी नहीं कि x हो. full space. Algebra में x होना चाहिए तो few x at least algebra में होनी चाहिए. So this one is the smallest algebra, not the smallest summary. आपको समझ आएगा ये स्मॉलेस्ट समीरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि स्मॉलेस्ट समीरिंग आपके पास ये है. अगर आप देखोगे ना, स्मॉलेस्ट समीरिंग आपके पास ये है, which contains only one set, the empty set. This is the smallest summary. Okay. X की requirement summary में नहीं है. That's why this one is not the smallest one. One more example. अगर हम S लेंगे, the power set of X, the all subsets of X.
then S is an वहाँ empty. पे फिर डेफिनेशन में चेंज मत आएगी अगर हम बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने किया था ना सिमरिंग के लिए पहले वो एक्स होना चाहिए नॉन एम्प्टी, अगर फिर हम एम्प्टी पी लेंगे उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 1 minute. 1 minute. हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर हमने लिया है ना सिमरिंग में भी पहले वो एक्स जिसका हम सबसेट ढूंढ रहे हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। हाँ, X नॉन एम्प्टी होना चाहिए. अगर अब वो एम्प्टी भी होगा तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं स्मॉल स्ट्रिंग के लिए? आपको एक्चुअली X के सबसेट्स लेने हैं ना, X के सबसेट्स आपको लेने हैं. तो अगर वो हम X अगर हम एम्प्टी लेंगे, यू हैव टू चूज द सबसेट्स ऑफ X. तो उसमें हमने लिया X नॉन एम्प्टी सिमरिंग में है. जी मुझे लग रहा है उसकी रिक्वायरमेंट शायद ना होगी वहाँ पर. यस, यू आर राइट. आई डोंट थिंक. 1 मिनट, मैं फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेता हूँ इसकी सिमरिंग की. मुझे नहीं लग रहा कि उसमें X नॉन एम्प्टी होना चाहिए. डेफिनेशन मैंने शायद लिख दिया होगा वहाँ पर. तो X हाँ नॉन एम्प्टी है. X नॉन एम्प्टी है. तो X अगर आप कह रहे हो X अगर एम्प्टी भी होगा उस इस केस केस में में फिर तो क्या फिर प्रॉब्लम भी होगी, क्योंकि उस केस में ये भी सिमरिंग आ जाएगी. हाँ तो स्मॉलेस्ट सिमरिंग तो फिर ये नहीं आएगी. दिस विल नॉट बी द स्मॉल सिमरिंग, क्योंकि X अगर आप एम्प्टी लोगे, इफ यू चूज X एम्प्टी, तो आप S ले सकते हो इसके सबसेट्स, ये ले सकते हो इस केस में, because the empty set is a subset of empty set. Can you take it's closed इसके बारे में सोच लेंगे क्या हम ये ले सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि ये हम सिमरिंग ले सकते हैं, बिकॉज वी मस्ट choose this X to be non-weight, but still this one is not the smallest one, smallest simmering. So there are examples of simmerings, क्योंकि smallest होने का मतलब ये है कि जो भी simmering आप लोगे that simmering should contain this one, है ना. अगर आप smallest इसको मानोगे, अगर हम लेंगे इसे X, let's take this X as 1 2, okay, and let's choose this its empty set, whole set X not whole set, let's take singleton 1. इसमें भी आएगा इसी में. It's a simmering, हाँ सर. it's a simmering, okay. और ये इसको कंटेन नहीं करा, it's not contained in Px, नहीं है ना. So still this is not the smallest one, smallest simmering. तो ये smallest simmering नहीं है. अगर हम ये भी मान लेंगे कि X नॉन एम्प्टी है, तो this is not your simmering actually. This is not the simmering, but you can choose this one, which is not contained in the simmering Px. So we can say this, the simmering Px is not the smallest simmering, but it is the smallest algebra. It's true. तो इसके बारे में मैं सोच लूँगा कि X नॉन एम्प्टी अगर हम लेंगे, सो दिस इज़ नॉट सिमरिंग, दिस इज क्लियर. मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट फॉर इट्स नॉट सिमरिंग. तो ये जो है ना एम्प्टी सेट जो हमने लिया, इट्स नॉट द सिमरिंग, बिकॉज वी मस्ट चूज X टू बी नॉन एम्प्टी. तो अगर मैं मान लूँगा कि ये भी सिमरिंग है, तो इस केस में तो X अगर एम्प्टी भी होगा तब भी हम सिमरिंग को डिफाइन कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द केस, बिकॉज वी मस्ट चूज X टू बी नॉन एम्प्टी इन आवर डेफिनेशन. सो फॉर दिस this class, this collection is not a summary, okay, this is not a summary. ठीक. So next example is this one. Let's choose
X is again non-empty set, and let's choose S to be the power set of X. It's obviously an algebra, because if you choose any subset of X, if you choose two subsets of X, then their union is again then their intersection is again a subset of X, because you are taking all the subsets of X. Perfect. Okay, so everything is there, whether it's complement, आप कुछ भी ले लो वो यहाँ ही है, because you are taking all the subsets of X. X. So clearly this S is an algebra. Clearly S is an Algebra. and it is the largest one. It is the largest algebra. It is largest algebra. One more example. Let's choose X to be non-empty set, and this F be a collection of disjoint subsets of X. Collection of disjoint subsets of X. Then this F need not be assembling, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसमें आप empty set लोगे. It's not a collection of all disjoint subsets. It's a collection of disjoint subsets, है? Not all. So this F need not be assembling. आपको बात समझ आ रही है? क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं कि इसमें empty set होगा. हाँ, कुछ केसेस में आप empty set भी ले सकते, but in general it may not contain the empty set. It may not contain the. मैं आगे इसकी भी एग्जांपल्स लूँगा, बट दिस वन, इफ यू चूज दिस एस इक्वल टू एफ यूनियन दिस सेट एम्प्टी सेट, दिस एस इज assembling, then this S is assembling. It contains the empty set, that is the first property, and the rest of the properties are simple, second and third, that we can verify. This F is S is F union the set empty set, not the empty set, the collection which contains the empty set. So then this S is assembling, is assembling. अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहोगे, verify this first property, clearly the empty set is there, empty set belongs to S. And the second property, let's choose two members of S. Let's choose two members of S. Then what about the intersection?